Very good evening to all of you. On behalf of Auditing and Assurance Standard Board of Institute of Chartered Accountant of India, I welcome you all in today's webinar on practical aspects on agreed upon procedures and compilation engagements. As we all are aware that these two standards are very important and both the topics are very important. In order to tackle this, we are having with us our learned speaker, C. Yagnesh Desai ji. On behalf of Auditing and Assurance Standard Board, I extend warm welcome to our today's speaker, C. Yagnesh Desai ji. Welcome to you, sir. We Thank are you, sir. happy with Thank you. us. Thank you. Namaskar. Namaste, sir. Namaste. We are having with us Honorable Chairman of Committee of Members in Industry and Business of Institute of Chartered Accountant, C. Durgesh Kumar Kamraji, Honorable Central Council Member. I also extend my warm welcome to you, sir, in this Zoom platform as well as the webinar organized by AASB of ICI. Welcome to you, sir. We are also having with us the Chairman of Cathal Branch of NIRC of ICI, C. Anil Kumarji. I also welcome to you, sir, on this webinar organized by AASB of ICI. Thank you, So sir. before we formally start, I request Honorable Chairman CMIB of Institute of Chartered Accountants, C. Durgesh Kumar Kabraji, for his words of wisdom as well as the keynote address. Over to you, sir, please. Thank you, Anilji. It's indeed a pleasure to be part of this wonderful initiative started by the AASB, Audit and Assurance Standard Board, which has not left us any stone unturned for building the skill set of the members of our fraternity who are into the practice. At this juncture, I welcome all the participants to this webinar organized by AASB. I appreciate the efforts of AASB to organize various programs to cover all engagements and quality control standards, industry-specific auditing issues, and other auditing aspects. Under the leadership of Sanjeev Singhal-ji, Chairman, and Vishal Bhai Doshi as Vice Chairman. I'm happy that today the subject which is going to be dwell are SRS 4400 and SRS 4410. These are the standards which deals with the agreed upon procedures and compilation engagements. And these are the standards on related services. And these standards, which is going to be dealt by none other than Yagnesh Desai ji, a well-known chartered accountant from Mumbai, who has delivered more than 1,000 lectures on Ind AS or standards on auditing and company law. And count is still on. And the way he presents is completely different. And when he starts presenting, you move into a different aura. I'm sure that when he'll be dwelling upon the SRS 4400, I'm sure that he would be guiding on both the standards 4400, 4410. Friends, let me tell you that SRS 4400 is a standard which provides guidance on auditors' professional responsibility when an engagement is performed to perform and agreed upon procedures regarding financial information is undertaken. This standard also provides guidance on the form and content of the report to be issued by the auditor. These are the engagements where auditor is engaged by client to issue a factual finding report based on the specific procedures performed on the specific subject matters. And in these kind of engagements, the procedures to be performed are required to be agreed upon between auditors and engaging party. If we talk about 4400, this is a standard which deals with the practitioner's responsibility when he is engaged to assist management and with the preparation and presentation of historical financial informations. The standards applies to compilation engagement,
for historical informations, which is financial in the nature. This standard may also be applied with necessary adaptations to compilation engagement for financial informations other than the historical informations, as well for the non-financial information too. But basically, these are more used for the purpose of historical financial information engagements. Compilation engagement is not an assurance engagement. We should be clear on this, and it doesn't require the practitioners to verify the accuracy or completeness of the information provided by the management for the compilation. In such engagement, the management retains responsibility for the financial information and the basis on which it is prepared and presented. Still, we, being the professional, we need to apply our own skill set and professional skepticism. We must see that we comply with these two related standards on related services when we are getting these kind of specific engagements. And I'm sure a person like Yagnesh Desai will be dealing with this subject. Everything which is there into these two standards will be taken care of, and the fundamentals of each one of us who is live on this webinar and listening to all of us, I'm sure all the issues which are there in their mind will be cleared up today. With this, I would like to thank the AASB for doing wonderful things for the benefit of the members at large. More specifically, very recently, two publications which have been published by this board. One is checklist and another one is the templates. So checklist with respect to the standards on auditing and various templates with respect to the documentation, which is must for all of us to take care. We chartered accountants are because of the auditing and assurance services, and these services are to be taken seriously. Our president, immediate past president, sir, has told, and it was there in the newspaper too, audit is a serious business. So everyone has to think twice before accepting any engagement and work seriously on audit engagements or assurance engagement. With this, thank you very much for giving me a patient listening, as well as thanks to AASB for giving me an opportunity to interact with all of you. Thank you all. Thanks to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for your words of wisdom. Within a very short time span, you have covered all the aspects and Yes. the gist of SRS 4400 as well as SRS 4410 revise. Thank you so much, sir. On behalf of AASB of ICI, I extend my heartiest thanks towards you, sir, for sparing your valuable time and for your kind words of wisdom. Thank you so much, sir. Thanks. With your permission, can we start the further proceedings of the webinar, sir? Yes, sir. Please. Yes, sir. So we are having with us the Honorable Chairman of Kethel Branch of NIRC of ICI, C. Anil Kumarji. I request Honorable Chairman of Kethel Branch, please start the further proceedings of this webinar as well as for your opening remarks. Over to you, sir, please. Thank you, sir. First of all, I will welcome our Central Council member Durgesh Kumar Kabra ji, who is also Chairman of Committee for Members in Industry and Business. Also welcome CA Yagnesh Desai ji, who is the guest speaker of today's webinar. And also welcome to you also, Sir Anil ji. With your permission, I will say some words for our speaker, Mr. Desai. As Mr. Kabra has told us that he has taken
more than 1,000 sessions. This is their today 1178 session of Mr. Desai. They have completed their 40 years of journey in the profession, and their membership number is 034975. He is CA and CPA USA. He has been practicing since 1983 and having wide knowledge of audit of corporate and taxation matters. He has been actively associated with activities of the ICAI. He is also IFRS trainer for certification course of Indian auditing standards conducted by the ICAI. Mr. Desai is also trainer in IFRS examinations conducted by ACCA of UK. He has composed and delivered e-lectures for accounting standards for the Institute of Chartered Accountants of India. He is speaker on accounting and auditing standards at various seminars of the Institute. He has also delivered motivational speeches at various national conventions and students' conferences. Between April 2009 till date, delivered 1177 sessions and seminars in about 40 cities in India and abroad. Mr. Desai is special invitee of the Accounting Standards Board of ICAI. He has been recently awarded Icon 2020-21 of Mumbai City by Times Group. His hobbies are composing music, comparing music shows. He has also taken part in half marathons, completed sustainability report course and passed the exam as well. After telling these things, I don't know. There are no words to or other words to say about Mr. Desai. I once again welcome Mr. Desai. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you, Ji. Namaskar, Durgesh Ji. Thank you so much for the wonderful words, and your presence is always invigorating. हमें एक प्रोत्साहन देते हैं, मुझे आगे बढ़ने का और भी अच्छा काम करने के लिए आप प्रेरित करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. And I can always publicly say that he's a good friend of mine. We both hail from Borivali. So besides my friend, he is a good mentor as well. And ये जो सब lectures आप देख रहे हैं 1178, इसमें दुर्गेश जी का भी काफी सहयोग है. काफी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है सर. सो ही आई वुड से इनडायरेक्टली ग्रूम मी एज वेल. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं. अनिल जी, दोनों अनिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर पुटिंग अ वंडरफुल वर्ड. एंड अनिल लाल साहब, आपने पुश किया था. आई नो आई हैड सम अदर कमिटमेंट, बट मैं पता नहीं क्यों आपको ना नहीं कह पाया. I don't know why, but I couldn't say no to you. All right, sir. Sir, welcome all participants. Good afternoon to everybody. And today, as sir has said, we are going to deliberate on agreed upon procedure. जैसे कि नाम बताता है, कुछ agreement हुआ है, कुछ समझौता हुआ है, कुछ understanding हुई है. किस चीज के लिए? Procedures. So when we do the audit, or for that matter, when we do the review, क्या हम ये डिसाइड करते हैं बाय एंड बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द सीए कि भाई देखो, क्लाइंट बोलेंगे देखिए हम आपको ऑडिट दे रहे, बट आप ये प्रोसीजर कीजिए, आप रिव्यू कीजिए, बट आप ये प्रोसीजर कीजिए. क्या क्लाइंट कहते हैं ऐसे? नो, दे डोंट से एनीथिंग. वी हैव टू बी गाइडेड बाय आवर ओन स्टैंडर्ड्स, आवर ओन विजडम एंड द आवर एक्सपर्टीज एंड जजमेंट्स. बट ये स्टैंडर्ड ऐसा है सर कि ना तो हमें अश्योरेंस देना है पॉजिटिव या नेगेटिव. That means negative means review and positive means examination audit. हमको केवल नरेट करना है. आपने हमें कहा कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग एनालिसिस बना के दे दीजिए. आप हमें बताइए कि भाई लीज कंपनी के पास पूरे इंडिया में, बाटा स्टोर की एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई तकरीबन 2500 लीजेस है शॉप्स. तो आप हमें ये बना के दीजिए कि कब
कौन सी लीज का रिन्यूअल होता है, क्या चेंज करना है, क्या नहीं, ये पूरी एक कंपाइलेशन बना के दीजिए और चैट जीपीटी के माध्यम से हमें ऐसे कमांड्स दीजिए कि हम पलकों में, मिनट्स में ये कर पाए कि ये आपकी कौन सी लीज रिन्यू हो रही या नहीं रिन्यू नहीं हुई और यहाँ पे खत्म हो रही, जिसको डिपॉजिट कहाँ से लेना। तो ये काम आपको दिया जाता है, बट इसमें एक समझौता होता है। नहीं, समझौता मीन्स अंडरस्टैंडिंग नॉट इन एनी अदर मैनर प्लीज, बट क्या करना, कैसे करना, कब करना वो नहीं कहते, बट क्या करना, कैसे करना। एंड that's known as the procedures agreed upon by and between the specified parties, relevant parties. कौन है वो parties? A client, B auditor. एक अच्छा अल्फाज यूज किए थे हमारे चेयरमैन साहब ने, दुर्गेश जी ने, प्रैक्टिशनर। जी हाँ दोस्तों, दिस वर्ड इज गोइंग टू बी नाउ यूज इन SRS 4400 because at international level ISRS 4400 has already been revised, and now our AASB is going to align SRS 4400 with IS International Standard on Related Services 4400 agreed upon procedure. सर, ये नया जो स्टैंडर्ड आ रहा है उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको संक्षिप्त में बिफोर आई कंक्लूड, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स अंडरस्टैंड कि दिस स्टैंडर्ड is not an auditing standard. It's not a review standard. It's something else, and that's the standard related on related services. Now, these services, to repeat and reiterate, are agreed upon. You will come across time and again many phrases and words: specified parties, specified procedures. एंड जब ऑडिटिंग और जो ऑडिटर, जो हमारे स्टैंडर्ड, जो वर्तमान स्टैंडर्ड है SRS 4400, that is using the word auditor. But the new standard, which is going to be revised in alignment with ISRS 4400, they are going to use the word practitioner. ISRS 4400 when they use the word practitioner, at the same time US GAAP में भी स्टैंडर्ड है अबाउट द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, वी कॉल इट AUP. आज के हमारे सेशन में हम कहेंगे शॉर्ट अब्रिविएशन AUP, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। चलेगा अनिल जी? AUP के नाम से हम जानेंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। यस और नो? यस। तो दोस्तों चलिए हम और आप खेलते हैं SRS 4400 की ये गेम। is under revision pursuant to the changes in the international standard, जैसे मैंने आपको किया बताया, and that standard is already effective from 2022 January, and we are very soon AASB is working very hard. जैसे अनिल जी भी आज पुष्टि की थी कि AASB is working very hard, is on the verge of near completion, the revision of SRS 4400. सर, इसके बाद हम we are going to study compilation engagement. अब जैसे मैंने कहा कि एक तरफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिव्यू, दूसरी तरफ AUP, ओके, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन। अब दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि these two standards, this 4400 and 4410 are not auditing standards. They are not review. As I told you, to repeat and repeat, पॉजिटिव अश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस दो में से कुछ नहीं देते। और कंपाइलेशन में जहां को तो वो तो सब वो आपको SQC स्टैंडर्ड भी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी आपको फॉलो करने नहीं कहते। यहां पे जिक्र क्या है? तो यू टू फॉलो दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय यहां अग्रीड अपॉन प्रोसीजर AUP? AUP जैसे दुर्गेश साहब ने बहुत अच्छा बताया कि इज एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कहे तो भाई आपको एक बैलेंस शीट दी गई है या तो अकाउंट से, उसमें कहते हैं कि भाई एक काम करो देसाई साहब, आप प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है उनके रजिस्टर की तहकीकात कीजिए, क्या है बराबर है कि नहीं। हमारे रिसीवेबल्स जो है उसके एजिंग एनालिसिस बना के दीजिए। ओके, एनी एबनॉर्मल बैलेंसेस है, कब से है, कहां से है, ये सब। बट ओपिनियन नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, यहां आप अपने आप को सीमित रखें। Confine yourself to only those things which you found. By doing what, sir? By applying the agreed upon,
specified agreed upon procedures by and between the parties. And now we all know by now that who are the specified parties. One is the auditor and second is the client. Word auditor से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, but now this is going to be changed because you're not auditing it, sir. अमेरिकी स्टैंडर्ड्स में इसे कहा गया है प्रैक्टिशनर. यूएस गैप में सिंस बिगिनिंग दे यूज द वर्ड प्रैक्टिशनर एंड दैट्स द करेक्ट वर्ड. अच्छा, जब अल्फाज की बात करते हैं तो SRS 4400 which is under revision, they are ICI also is going to use the words and phrases practitioner. अब जहां तक कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बात है सर, आप हैरान रह जाएंगे. हाँ जी हाँ, बताता हूं आपको. I'm going to tell you the word they are going to use is neither practitioner nor auditor, but then an accountant. So you'll find the difference that where the word accountant is going to be used, it has got nothing to do with the audit. It has got nothing to do with the review. I would say it has nothing to do with AUP also, because he is simply acting as an accountant. And if I'm allowed to say so, when I was taught compilation back in 2003 when I was pursuing my CPA. My professor has said me very correctly, and so I think if I use this now also, you will understand very well. Compilation means पूरी बांधना. That's it. पूरी बांधना. आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उसमें आपको देना है कि भाई बैलेंस शीट कैसे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब बना के दीजिए, रिजर्व्स का टेबल बना के दीजिए. दैट्स कंपाइलेशन. आपका दायित्व केवल इतना ही है. ठीक है. So that's going forward for the compilation. Okay, now coming back to this fact, जैसे दुर्गेश जी ने कहा कि agreed upon procedures AUP is applicable not just to the financial statements, financial information, but even non-financial information also, provided the auditor has knowledge of that field. सर मैंने ऐसे रिपोर्ट देखे हैं कि agreed upon procedure में रोड ब्लॉक्स तो रहते हैं. रोड ब्लॉक्स एक 10 किलोमीटर की रेंज में रोड ब्लॉक्स कितने लगाए हैं, कितने स्क्वायर लगाए हैं, कितने राउंड लगाए हैं. सर ऐसे भी प्रोसीजर के लिए ऑडिटर यानी प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट देने पड़ते हैं. दिस वाज द एग्जांपल व्हिच आई हैव सीन रिपोर्ट इन यूएस. When I was studying the CPA, at that point in time, the professor has shared this. That what do you mean by AUP, agreed upon procedure for non-financial information? Okay, fine. Now, these are the nomenclatures used by the US GAAP. Uses the word accountant come practitioner. ISRS 4400 use the word practitioner. RSRS 400 right now before revision auditor. Proposed amendment uses the word practitioner. अब सब एक रुक करते हैं हमारे लिंक पे. Sir, can you see the Excel sheet on your screen, sir? Anil ji? Anil ji, you are on a mute. You are on a mute. Please unmute yourself. All right. So Sir, this it is visible. Okay, fine. So this is a table which shows that examination, that means audit. Second is review. Top is examination. उससे एक step down is review, and then उससे और भी एक step down AUP, agreed upon procedure. So in this case, the written assertion is required from the client. Review also is required. In case of agreed upon procedure is also required. Before that, गौर करते हैं independence. Independence is required in audit and review, both compulsory. As far as agreed upon procedure is concerned, I put a star mark. Maslan, it is not compulsory. An auditor may not be independent. एक दो slides है जिसमें मैंने discuss किया है about whether the independence is required or not. And if the auditor is not independent, what to be done? अगर auditor independent नहीं है तो क्या करना चाहिए, देखेंगे कुछ slides के बाद. तब तक line पे बने रहिए. All right? चलिए. Then written assertion is required in both, not required. However, lack of assertions should be disclosed. Assertion means आप पार्टी ने कहा आपको ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए. But normally it is there. The prudent policy is there. Type of report.
As far as audit is concerned, we give the express the positive assurance, and as far as the review is concerned, we give whether the material modification is required or not. We also call it a negative assurance. But as far as AUP is concerned, you don't give any kind of assurance, not the positive, not the negative. केवल एक ही बात कीजिए, फाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन की सर्टेन प्रोसीजर्स which is agreed by and between the specified parties, specified procedures. ऑडिटर का काम केवल ये है कि हमने जो हमारे बीच में जो डिसाइड किए गए थे, ये प्रोसीजर भी अप्लाइड एंड आई फाइंड दिस फिनिश. लक्ष्मण रेखा हो गई आपकी, एक कदम भी आगे नहीं चाहिए. व्हाट डू मीन बाय आगे ना जाइए? ओपिनियन मत दीजिए, रिकमेंडेशन भी मत दीजिए सर. जी हाँ, दो चीजों से पर रहिए, ए ओपिनियन, बी रिकमेंडेशन. All right. Then let us see, level of assurance is very high. It's the highest top level of assurance is in the audit. Then bit diluted in review. And अब यहाँ पे आए तो हर जगह पे finding of procedure, because you don't give any assurance at all. Amount of evidence sufficient, appropriate to support opinion, sufficient, appropriate in case of review, and यहाँ पे finding of specific procedures. Working paper is required. Working paper cat is required everywhere. So this was the comparison amongst the A, audit, B, review, and 3, agreed upon procedure. Computer G, now let's go here. All right. Now, precondition of an agreed upon procedure. कुछ शर्तें होती है जिनका पालन करना चाहिए. You must follow certain procedures. You must follow certain norms that whether should I go for this assessment, accept this engagement or not. Now, I have started with this first thing. In addition to the concept common to all the attestation engagement, the practitioner, I am using the word practitioner now interchangeably even for the audit, because यही वो अल्फाज है जिनके साथ हमें जीना है, जीना मरना है. SRS 4400 revised is going to use this phrases and not the auditor. Auditor is used by SRS now, but it is going to be a matter of history. It's going to be a matter of past. तो आपको जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है शर्तों के पालन करनी है, लाइक SOQ, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 आपको फॉलो करना है, राइट सर. डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉलो करना है, लाइक दैट. Then engagement letter आपको लेना है सर. Okay, so all these you have to follow. So in addition to the concept, the common to all attestation engagement. So basically, if you go to see audit, review, and agreed upon procedure are attestation function. Compilation is not. The specified parties agree on the procedure to be performed. हम और आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा दोस्तों, एक बात आपको मैं बताता हूँ. आप बोलेंगे सर आप स्पेसिफाइड प्रोसीजर बोलते बोलते हमारे तो कान पक गए. वी आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस वर्ड. सो गिव मी वन एग्जांपल ऑफ दैट. जी हाँ, बिल्कुल. एंड आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बिकॉज I was also a participant one of these days, and I am a participant even today for many of the seminars. Correct? Life is a learning curve, and don't stop learning. Don't stop learning. And to those who are the young chartered accountant practicing and the participants, I would request you that you make the most of AI. If you don't learn AI, in next 2 years, you would be redundant. Someone else may take you over. And if you learn the AI, believe me, you will be able to focus more creatively on many other aspects, because AI can help you reduce your time. जो चीज आप 10 घंटे में 8 घंटे में करते हैं, with the use of AI, you can do it in just 15-20 minutes. Correct? So please try and learn newer things. ये मेरी फितरत में ऐसी हिदायत देना, because I believe that youngsters are more tech savvy. अनिल कुमार साहब जो हमारे ब्रांच के चेयरमैन है, उन्होंने यही कहा कि भाई ये आज की नई पीढ़ी जो है, दे आर टेक सेवी, एंड वो हमें सिखाती है कि क्या करना चाहिए. एंड नलिन जी, मैं आपसे सहमत हूं कि नई पीढ़ी एज फार एज दिस इज कंसर्न इज फार अहेड ऑफ अस, एंड आई सैल्यूट द न्यू जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स.
Specified parties take the responsibility of the sufficiency of the procedure. So both parties know कि yes, हमें मंजूर है, and we know the repercussions of these procedures. हमने तय किया, I know my business. So that's why I'm telling Mr. Auditor or the practitioner कि भाई आप सिनेमा हॉल के लिए हमें जो टिकट्स का कलेक्शन देखना है, तो आपको क्या देखना है? एक जमाना था जब सब मैनुअल था, but now things are good. So you get the report from the book my show. You get report of the जो आपके जो बैंक से है, जो डायरेक्ट आरटीजीएस से पेमेंट है, उसका रिपोर्ट लीजिए, करेक्ट, एंड रिकंसाइल दिस अगेन देयर द यूज ऑफ AI is going to help you a lot, sir. The procedures can be performed and reported in accordance with the SRS 400. Yeah, this procedures ऐसी होनी चाहिए कि आप it should be workable, it should be doable, it should be possible for the practitioner or the auditor to do this procedure perform. ऐसा ना हो कि भाई 1 लाख में आपने एक प्रोसीजर करने के लिए एयूपी दिया और प्रोसीजर इतनी लंबी है कि बेचारे के 2 महीने चले जाएंगे एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व विल बी 2.5 to 3 लाख रुपीस. खैर वो तो ऑडिटर एग्री नहीं होंगे, बट दिस शुड बी डूएबल, वर्केबल. The procedure is expected to result in reasonably consistent findings using the criteria. They give such a criteria that the variation should not be more than 10%. It should be in the bandwidth of 5 to 10% or something like that. जो criteria है, जो procedure है, वो सब तय करके रखी, सीमा रेखाएं तय करके रखी, इससे आगे मत जाइए. पर एक बात ध्यान रहे सर, आपको ध्यान रखना है कि आपकी सीमा रेखा तय करनी है. एंड वो सीमा रेखा क्या है सर? अपने आप को सीमित रखिए, केवल confine yourself to only the findings. Don't give conclusion. Don't give recommendation. This is one of the biggest restriction of the AUP. The auditor agrees to, खैर हमारा पेशा ऐसा है कि we may be inclined to say like that. Even if you want to do that, do it verbally, unofficially, not on record, not on paper. Your report should not include anything about the conclusion. Your report should not mention anything about the opinion, because then you are breaching the norms of a standard. Standard की अहमियत रखिए साहब, and उनकी सीमा रेखा से बाहर मत जाइए. Auditor agrees to apply any materially limits established in the specified parties. Of course, it's a part of the procedures. Use of the report is restricted. ये बहुत जरूरी है. जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड में यूज किया है वर्ड, यू शुड अलर्ट मींस उसको सावधान कीजिए. किसको? रीडर्स को. क्यों? कि भाई ये रीडर मे नॉट बी द स्पेसिफाइड पार्टी, रीडर नीड नॉट बी एंड मे नॉट बी द स्पेसिफाइड पार्टी, क्योंकि ये जो कंडीशंस तय हुई है, whatever conditions have been agreed by and between the parties, A, practitioner come auditor, B, client, that the significance of that may not be known or may not be there, may not be known to, or he is not an expert to know the repercussions of such assumptions, such procedures. So in other words, you must always say that the use of this report is restricted to this party. It is not meant for the general public. And institute ने भी एक standard में दिए है सर, reports में दिए. सर एक और भी एक रोचक बात बताऊंगा आपको, and very interesting thing I'm going to share with you, and that is the difference in the reporting between the existing SRS 4400 and revised. The one which is a revised one, which is going to be implemented in some time from now, has very good things, sir. The procedure applied and the result thereof. So the reader knows that what are the procedures applied. It's very transparent, because it is not there till now. It's going to be there now. Once SRS 4400 device is replaced, is into the place, right? The genesis of the AUP, as the name indicates, the procedures to be performed are agreed upon. दोनों ने तय कर दिया है, सहमति है, by the appropriate third parties. It could be by with third parties also. That I give the example, say for example, there's a company ABC, and for that I have given, sir एक बात बताऊं कि my job is only to compile all this. जब compilation engagement की बात करते हैं, तो my duty is also to compile. I have taken the support from the US gap also.
I have taken the support of the ISRS and other some public media and downloaded certain very good reports. And वो भी बताऊंगा आपको what are the procedures, what are the limits, what are the variations. Correct, sir? So the engagement could be with third parties also. Say ABC Limited is a company, and that company has taken a loan from another bank or the financial institution. And this ABC company is also eligible for the government grants also and all this. So there are three parties: A, ABC Limited; B, auditor or practitioner; and C, the financial institution. So in that case, even the third party also has to be updated. उनको भी अवगत कराना है क्या procedures है. Okay, sir. Should adhere to the code of conduct, code of ethics. यहाँ पे they mentioned that as far as AUP is concerned, auditor should be abide by the code of ethics. इसका जिक्र compilation में नहीं है. Asha, do you find such agreements with the procedures in case of audit or review engagement? Anil साहब, आप तो मेरे ख्याल से काफी सालों से प्रोफेशन में है. कभी ऑडिट में देखा है आपने कि भाई क्लाइंट ये कहेंगे या रिव्यू में कि भाई आप ये प्रोसीजर अप्लाई कीजिए, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कीजिए, कंफर्मेशन लेटर्स लीजिए, ये कीजिए, फला ढीका करो. हैव यू सीन एनी टाइम इन द ऑडिट रिपोर्ट, सर? नो सर. नो. सो यहां बहुत बड़ा चेंज है. देयर इज अ पैराडाइम चेंज बिटवीन द ऑडिट रिव्यू ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. नाम ही बता देता है सर, ऐसी प्रोसीजर कीजिए जो अग्रीड है by and between the specified parties. All right. Now, the procedures to be performed are like this. Which are subject of interpretation. ये ध्यान रहे सर, subjectivity से दूर रहें. This, in a practical parlance, we face many times. That, in my opinion, or this should, because the moment there is a subjectivity, there is an inbuilt opinion. Subjectivity जहां भी आई है, wherever there is a subjectivity, it results into the opinion. So you have to keep yourself away from this subjectivity. To avoid ambiguity, there should be associated with the action to be taken, procedures to be followed. And this para is from the AICPA material, which is very rich in implementation guidance of agreed upon procedure. आपके benefit के लिए I have got it compiled from that. The description of the procedure should be very specific, to the point, no ambiguity, should be sufficient, precise, and certain. Examples of acceptable descriptions of the actions are inspection, confirmation, compare, traces, inquire, recalculate, observe, and mathematical check. These are all objective. आप कंफर्म करेंगे कि भाई सामने वाली पार्टी ने टिकट्स कलेक्शन कितना कंफर्म किया है, per show, how much. You will trace the money received from the book my show. You'll go and vouch for the reports and the charts generated by book my show. You'll recalculate after paying the entertainment tax how much is the ticket collection by that party. Then you can apply the mathematical check कि भाई मेरा entertainment tax अगर 100% है, and if I collected 200, my net collection of tickets should be 100. तो आप सीधा देख लीजिए entertainment tax कितना भरा है. सीधी बात है, if the entertainment tax paid is about say 10 lakhs, then your share, theatrical share, is 10 lakhs. Mathematical formula apply कीजिए. Example of procedure which is not acceptable. ये पहला जो था item number 3, what should be done, what is acceptable, and that is those things. What is the difference between item number 3 and 4? क्या भेद है 3 और 4 में, क्या फर्क है? 3 is objective, 4 is subjective. Limited review, evaluate, analyze, check test, maybe check test. Then this may be a positive objective, but interpret, verify,
unless defined to indicate the nature, timing, and the extent of the procedure. And evidence obtained for the agreed upon should provide a reasonable basis for the reported findings. For the reported finding, they are not using the word opinion. केवल एक ही बात करते हैं findings, because that's what you need to convey to the client. Additional procedure which are outside the scope of engagement need not be performed. सर ये तो एग्जाम्पल्स है मैंने दिए आपको कि भाई कंफर्म, इंस्पेक्ट, कंपेयर, ट्रेस, इंक्वायर, इनमें से जरूरी नहीं कि सब वो लिख के दे. They may give only 4 or 5 procedures. तो दो सीमा रेखाएं हैं आपकी लाइफ में. एक तो प्रोसीजर्स जो तय की गई है, agreed upon by and between the parties, specified parties. जी हाँ, confine yourself to those procedures. And second, don't give opinion, don't give conclusion, don't या बी इतना अच्छा क्यों गाता है या गाती है वो मत. यू से मिस बी हैज सung, दैट्स इट. करेक्ट. किसी ने 50 रन बनाए, अब 50 रन तेजी से बनाए कि देरी से बनाए, वो कुछ मत कीजिए. फैक्ट, नरेटिव ऑफ द फैक्ट्स, नथिंग बियॉन्ड दैट. While the whole gamut of AUP is like this, auditor is engaged by the client, appropriate party to the issue a report on a factual finding. The report is based on the specified procedures performed on a specified subject matter of the specified elements, accounts or the item of a financial thing. या तो पूरी बैलेंस शीट को आप बोलेंगे, वो बोलेंगे कि हमें वो बना के दीजिए, अकाउंटिंग रेशियो. अब रेशियो बना के दीजिए. वेरी गुड एग्जांपल जो आपसे बात करते मुझे तुरंत दिमाग में आया. अकाउंटिंग रेशियो कीजिए बना के, बट उसकी तुलना मत कीजिए कि रेशियो इज हायर और लोअर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और इट इज हायर और लोअर एज कंपेयर टू द नॉर्मल नॉर्म्स. आरओआई क्यों बढ़ा क्यों घटा मत कीजिए. जैसे एआईआर इंफॉर्मेशन में आते हैं ना, शेड्यूल 3 टू द कंपनीज है, डोंट व्हेन द वेरिएशन इज मोर देन 25% गिव द रीजनिंग मत लीजिए. केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लिख के छोड़ दीजिए, ये मेरा निष्कर्ष है, ये करना है. No assurance, neither positive nor negative by the auditor. No conclusion, no opinion, even no recommendation by the auditor. Sir, हमारे participants में तो शायद you may say that why Yagnesh Desai साहब is repeating this time and again. Because ये standard जो है sir, this standard, my dear friends, we don't use so often. अनिल जी, audit हम दिन दहाड़ों करते हैं, review reports हम करते हैं very regularly. Do we follow this agreed upon procedure so frequently? नहीं. जी आप सहमत हैं मुझसे? Yes, sir. इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है. Third party draws at conclusion based on the report. Conclusion is their prerogative. ये उनका दायित्व है, आपका नहीं. एग्जाम्पल, समरी ऑफ जीएसटी वर्किंग, पूरा मुझे वर्किंग दीजिए. इनपुट क्रेडिट कितनी है, आउटपुट है कि नहीं, वो जीएसटी कैश लेजर से टैली होता है कि नहीं, ये सब देख लीजिए. कहीं आरसी हमने लिया है कि नहीं लीजिए, वो सब कीजिए. राइट. ड्यू डिलिजेंस इज अगेन मोस्ट लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. उसमें क्लियरली कहते हैं कि यू हैव टू वाउच दिस, दैट्स इट. वेरीफाइंग, मेकिंग रेसिबल रिजल्ट. सो ऑल. अच्छा सर, हाँ, अब आ गई वो घड़ी जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था. सर ये एबीसी फाइनेंस लिमिटेड है, इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स रिपोर्ट. सर एक दूसरी बात बताऊं कि इंडिपेंडेंस ऑफ अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर, ऑडिटर इज जरूरी, मगर हमारे जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के स्टैंडर्ड है ना 4400, इसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर या इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट या इंडिपेंडेंट ऑडिटर का टाइटल का जिक्र नहीं किया गया. इंक्लूडिंग एसआरएस 4400 रिवाइज में भी नहीं किया गया, जो आई थिंक एज पर यूएस गैप वी शुड इंक्लूड दैट टाइटल. जैसे ऑडिट रिपोर्ट में कैसा किए थे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है ना. तो जहां पे ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, सो दिस इज टेकन फ्रॉम द यूएस गैप. केवल टाइटल
अलग है हमारे से, बाकी सब चीजें ठीक। क्या अलग है? दे यूज द वर्ड इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जबकि हम एंड अकाउंटेंट या ऑडिटर इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी नहीं लिखते. We don't mention the title that is independent auditor, despite the fact that the auditor is independent. Well, on that also I have said something. I is there in the slides. So this you are writing to the company, correct, accounts officer, that Mr. Shah, we have been retained by the XYZ Limited company, XYZ Limited company has appointed you, and now this ABC Finance Limited is a finance company which has given loan to XYZ. XYZ has appointed Anil Sahab as a auditor, as a practitioner. So अनिल साहब ये लेटर लिख रहे हैं मिस्टर शाह को, कि अनिल जी लेटर लिख रहे हैं कि भाई वी हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय XYZ टू अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आउटलाइन इन अपेंडिक्स ई. अपेंडिक्स ई में उन्होंने वर्क as to what these procedures are. Attached draft copy they say. तो ये कहते हैं, देखिए 3 parties हो गई यहाँ पे, tri-parties. XYZ which has taken the loan, ABC finance company which has given the loan. ABC ने कहा कि हमको ये रिपोर्ट चाहिए, तो XYZ ने कहा ये रिपोर्ट आपको किससे चाहिए? तो भाई अनिल साहब से चाहिए. तो अनिल भाई ने कहा कि सर मुझे तो फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करना पड़ेगा. तो आइए रुक करते हैं कि ए में क्या लिखा है. ये then respond the procedure listed in the proposed draft copy report applying agreed upon procedure for this project are not or are not करके आएगा, and then Mr. Sai is approving that. Mr. Sai is from the finance company, and then ये appendix E है. This is giving the agreed upon procedures. Obtain and read the following documents from DCDC department and the management of the company. Assistance agreement and the business proposal between DCD and the company. Comparative budget of the actual statement program cost. Project financing plan and budget. Representation data. Using the comparatives budget, they give the pura viewron also. Report all the findings and questions costs we found. Review the company's assistance program. So these are the procedures. जो हम बात करते आते हैं ना अनिल जी, यू रिमेम्बर मैंने जिक्र किया था, आपको बताऊंगा कि भाई स्पेसिफाइड प्रोसीजर का कितनी बार तकिया कलम के जैसे मैंने जिक्र किया था, राइट? These are the specified procedures. Yes, these are the examples of the specified procedure. ऐसे तय किया जाता है, correct sir? Determining all the expenditure tasted. Test the physical existence of the facility and the fixed assets purchased with the DCD funds. आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट दी गई है कि भाई आप ये सोलर प्रोजेक्ट खरीदिए, then the sustainable reports के तहत certain other instruments are required which will reduce the pollution. तो वो देखिए कि बराबर उसका पालन किया गया है कि नहीं. Randomly select the fixed item from the fixed asset register, investing listing, ट्रेसिंग द सिलेक्टेड आइटम टू द कंपनीज परचेसिंग, जिसे कहते हैं ना ट्रेसिंग. सर याद है आपको मैंने कहा परमिसिबल एक्शंस, ट्रेसिंग ये है मेरे पास मशीन बुक्स में, मैं ट्रेस करूंगा उससे कि कहां से दिया गया था, कौन से फंड से दिया गया था, करेक्ट सर? भूल सी. बट आप ये नहीं कहेंगे कि उसके परचेज ज्यादा है ये कम है. देन ये पूरा रिपोर्ट है, देन रिपोर्ट which is given as per the essay 4400 sir. And yes, sample statement of the program cost, budget, non-DC budget, total budget, accruals, these land cost, appraisal fee, training, relocation. So these are the tables and samples they've taken. So this basically indicates the agreed upon procedures and the findings of the reports. So is there in page number 3? Yeah, fine. Now, difference between AUP, audit and review. Agreed upon procedures engagement is not an audit at all. Review or other assurance. Not to audit, not to review, not to any other assurance. Engagement does not provide obtaining involving evidence for the purpose of the auditors expressing an opinion or the assurance conclusion anytime. Findings are the factual results. आप केवल एक ही काम करेंगे, भाई ये है,
डोंट बी ओवरवाइज, एक शब्द आगे मत लिखिए। अकाउंटिंग रेशियोज ये है ना, वेदर इट इज अ हायर लोअर एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स एज पर द लास्ट ईयर, कुछ मत कीजिए। आप जज्बाती हो के ये कहने पे तुल, I mean, you'll be compelled to do so, but don't do that. References to findings in SRS exclude opinions or a conclusion in any form, directly or indirectly. I would put it this way. Standard is not said, but I am going to tell you directly or indirectly, don't give opinion. उसकी भनक तक नहीं जानी चाहिए कि आपने opinion दिया. As well as any recommendation that the auditor may make. In an audit conducted under the AUP, auditor provides only factual findings and does not offer opinions, conclusions, or assurance in the final report. Instead, auditors' report simply present the facts with the audit facilitation drawing their conclusion. Now, ये conclusion करना, निष्कर्ष पे आना, to draw a conclusion, to frame an opinion, is the prerogative of the third party or the specified party, not you. Okay, sir? Now, AUP, how useful to the entities? Now, this paragraph I have taken from the United Kingdom, London Institute of Chartered Accountants. AUP are most effective where the engaging parties are knowledgeable enough to identify the area or the matter to focus on and discuss the agreed upon procedure. एक और भी एक बात कहता हूँ यहाँ पे, AUP is also more effective when it is not required to get any audit done. अब सब इंडिया में तो ऐसा है कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑडिट कराना है, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो या 1 person कंपनी. But as far as USA is concerned, the private companies are not supposed to go for the audit. Only listed companies are go for the audit. So in this case, थोड़ा पानी और लाइए, huh? Thank you. In this case, I think is there one of the slides also that even the private company which is not required to get an audit may get the AUP done from the consultant. अब बात करते हैं auditors' independence. Now this is from our SRS 4400. Independence of auditor is not a requirement for the agreed upon procedures. Unless required by the terms or the objective of the engagement, or the objective of the engagement may require the auditor to comply with the independence requirement of the code of conduct of the ICA. That's why perhaps the word is not used, the title is not used, independence auditors. Correct, sir? But where auditor's independence is required, if the practitioner is required to be independent or has agreed in the terms of the agreement to comply with the independence requirement of the code of conducts, then auditor is required to be independent of this. The statement shall identify the relevant independence requirement also, and he will mention that he is a independent auditor. But मान लीजिए auditor independent नहीं है. So do you think that he won't be able to do the work? He'll not be able to exercise the agreed upon procedure assignment. No, it's not like that. Where the auditor is not independent, as he may not be required to be independent, a statement to the fact that he is not independent must be mentioned. Surprisingly, the title independent audit report is missing in the specimen report in both the existing SRS and 400 and ISRS. In दोनों भी standards में, sir, SRS 400 is adopted from International Standards on Related Services, ISRS. इन दोनों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है about the independent auditor. अच्छा सर, ये तो हमारा सीखने का जो प्रोसेस है इज वेरी कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव. ऐसा तो कंपार्टमेंटलाइज नहीं है कि ये अभी देखो, ये बाद में देखो, ये इसके ये पेज स्लाइड नंबर 25 के बाद ही 26 देखो, ऐसा तो कोई स्लाइड है नहीं. तो चलिए हम रुक करते हैं. SRS ISRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिपोर्टिंग सर्विसेज 4400 रिवाइज्ड, जिसमें
उन्होंने दिए हैं कि भाई they have given the specimen of the report, sir. All right. So अनिल जी, लाल साहब, अनिल जी आपकी इजाजत से हम ये जाते हैं SRISRS एंड यहाँ पे आई थिंक जस्ट अलाउ मी मिनट सर. I think it's here. Okay, it's here. It is here, sir. Now, illustration of the agreed upon procedures reports. अब ये report जो है sir, which is as per the revised SRS 4400. I would say ISRS, international. The purpose of the illustration agreement report following is the engaging party is the addressee and the only intended use. Very good. The only intended user. बाकी कोई यूज नहीं कर सकते. And that's why we limit the use of this report. No exemptions were found. The practitioners did not change the report and all this says fine. Now, this is agreed upon procedure report on the procurement of the XYZ product. यहाँ पे agreed upon procedure है जो खरीदते हैं product उसके बारे में. So to the industry, the purpose of this is the revised format, sir. Our report is solely for the purpose of assisting the engaging party in determining where this responsibilities of the both party, which is always on the engaging party. जैसे हम लिखते हैं ना audit report में, the financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these standards. In the same way, the responsibility of these statements is that of the engaging party. Practitioner's responsibility. We say, auditor, we have conducted the agreed upon procedure engagement in accordance with the international standard. Now, here, when it comes to India, we will say the standards on the related services, as we will remove I. Agreed upon procedure, and agreed upon procedure involves our performing the procedures that have been agreed with the engaging party and reporting the findings which are the factual results of the agreed upon procedures performed. We take no responsibilities regarding the appropriateness of the agreed upon procedures. हम ये procedure सही है, गलत है, results सही है, गलत है, वो इससे हमें टिप्पणी नहीं करेंगे. बराबर ना सब? शुद्ध हिंदी में कहूं तो टिप्पणी नहीं करेंगे, राइट सर? हाँ, तो बस बट केवल अपने आप को सीमित रखेंगे. A is A and B is B. आपको जो डिस्कस लेना है कीजिए. हाँ सॉरी सर, जो आपको डिसीजन लेना वो ले लो. हाँ हाँ, करेक्ट. प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल वो है. Our firm applies वो करेक्ट फाइन. Now this is a big change, sir. Procedures and findings. We have performed the procedures described below, which were agreed upon with the engaging party on the procurement of the product. तो देखिए सर, ये प्रोसीजर चल रही है कि यहाँ भी प्रोसीजर का रुख करते हैं सर. Obtain from the management a listing of all the contracts signed between this date and this date for the XYZ product. We obtain from management a listing of all the contracts of the 125 contracts. On the listing, we identified 30 contract valued over 6. अब ये contract खराब थे, सही थे, अच्छे, कुछ नहीं बोलते. For each contract identified, which is valued about 25,000 on the listing company's contract in the process of bidding, compare the contract, listing, tracing, and computation, recalculation, वो सब procedure accepted है. To bidding by at least 3 contractors from the responsible parties to a pre-qualified contract. We have inspected. Inspection is also one of the AICP की manual में दिया है, जो आपके लिए मैं लाया हूँ कि inspection is also one of the accepted. Related to the 37 contracts value, पूरे 37 को किया है. We found that finding of application, finding of procedures applied, were subject to the bidding by at least 3 contractors from the responsible parties pre-qualified. For each identified contract valued over 25,000. So this gives in detail all the procedures.
Okay, now there's given, now in nowhere they have given the independent auditors report or something like that. चलिए हम बताते हैं आपको, आप बोलेंगे सर ये तो अब नए जो चीज आने वाली है उसका जिक्र कर रहे हैं, राइट सर, जो 4400 रिवाइज होने वाली है. What about the report as of today? What about the report is by today? So ये report है यहाँ पे, example of report of the factual findings in connection with the accounts receivable. अकाउंट रिसीवेबल एक हिस्सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. इट इज अ सबसेट ऑफ द लार्जर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग इन कनेक्शन विद द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर असाइनमेंट रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल्स. देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हाट प्रोसीजर्स यू अप्लाइड फॉर. नहीं, वी हैव परफॉर्म द प्रोसीजर्स एग्रीड. वो कौन सी प्रोसीजर उसका जिक्र नहीं करते. दिस इज द ओल्डर वर्जन, एग्जिस्टिंग वर्जन जो हमने 2 मिनट पहले देखे यहाँ पे, वो था दैट वाज द रिवाइज वर्जन. एंड यू नो लाइक दिस देखिए द प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग बोथ. जबकि यहाँ पे आप प्रोसीजर पे एक मिनट हाँ, जबकि यहाँ पे अब प्रोसीजर क्या अप्लाई किए नहीं लिखे, केवल लिखते हैं कि वी परफॉर्म द प्रोसीजर्स अग्रीड विथ यू एज अ कंपनी एंड एनुमरेटेड below in respect with respect to the accounts receivable set forth for a company schedule not shown as example. Our engagement was undertaken in accordance with the SRS 4400 and issued by the ICI. Fine, we obtained and checked the additions of the balance account receivables, ye wo hai. Then we compared the attached list of the major customer outstanding. We obtained the customer statement, obtained confirmation, sir. Now here again, don't say that's a procedure given by the standard of auditing, but here is a specific procedure. Obtain the customer's confirmation. We compared the such statement, the fine for the reconciliation. We located and examine such invoices, debit notes, fine, as we ascertain they have been rightly listed in the outstanding reconciliation. In our report finding below, with respect to item number, we found additions to be correct, and this thing, and this we found the amount compared to agreement, right? But ये सही है, गलत है, या आगे कुछ नहीं. And here, because the above procedure is do not constitute either an audit, ये लिखना जरूरी है. इसका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि ना तो ये ऑडिट है ना तो रिव्यू है. Correct? In accordance with the generally accepted auditing standards in India, we do not express any assurance on the accounts receivables at the date. Had we, अब फिर एक कदम आगे जाते कहते, अगर मान लो हमने ऑडिट किया होता, तो किया ही नहीं हमने अपने आप को सीमित रखा था. We confined ourselves only to limited procedures and not gone beyond certain things. Because had we performed the additional procedures or had we performed an audit or review of the financial statements in accordance with the generally accepted auditing standards in India, other matters might have come to our notice attention that would have been reported to you. A report is solely, ये जो alert कहते हैं यूएस भाषा में, हमारी भाषा में कहते हैं limited use of the report. लास्ट पैरा में है. Our report is solely for the purpose set forth in the first paragraph of this report and for information that is not to be used for any other purposes or it to be distributed to any other parties. This report relates only to the accounts and items specified above and does not extend to any financial statements of ABC company taken as a whole. ये वर्तमान SRS 400 है. देखिए striking improvement. And Anil ji, आप सहमत होंगे मुझसे कि there is a remarkable improvement in the audit report, in this report. Yes sir, कि यहाँ हम केवल ये नहीं कहते प्रोसीजर अप्लाई कर ले, हम कहते हैं कौन सी प्रोसीजर अप्लाई है ना सर. डिटेल में हमने दे दिया कि क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया. हाँ, तो जो मैं कहा था ना आपको, कौन सी प्रोसीजर्स है, स्पेसिफाइड प्रोसीजर, तो उनका भी जिक्र किया. एंड फाइंडिंग connected or related to that procedure, उसका भी हमने जिक्र किया. So we are very clear about it, है ना. तो बहुत जैसे कहते हैं पारदर्शिता है. Am I right sir? Yes. तो हाँ, मगर ये यहाँ पे प्रोसीजर इन फाइंडिंग दिस थिंग
सर एक चीज यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, एंड आई ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ASB आल्सो, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, डेट, रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर्स एड्रेस, दैट्स फाइन, बट आई एम नॉट फाइंडिंग इन दिस। ये तो है अपना ISRS का रिपोर्ट, द पर्पस हाँ लिखा लिखा। देखिए पहले हमारा ओपिनियन एकदम पीछे था ना पुराने ऑडिट रिपोर्ट में, अब ओपिनियन आगे आ गया था, राइट? एज पर द ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ भी है, दिस रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द एंगेजिंग पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर एंड शुड नॉट बी यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्टीज। तो लिमिटेशन उन्होंने यहाँ पे आगे लाके रख दी। करेक्ट सर? जो अगले हमारे जो वर्तमान चल रहा है उसमें एकदम बॉटम पे उसको ऊपर रख के रखती है। हाँ अच्छा अनिल जी, आप, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। यस सर, यस। कुछ सुझाव है तो बताइए सर प्लीज, एनी सजेशन? मैं अभी जो प्रेजेंट SRS है उसमें लास्ट में एक देख रहा था, रिपोर्ट में लास्ट में एक कॉलम था, हैड वी अप्लाइड मोर प्रोसीजर्स वी हैव कुड फाइंड दीज। हाँ वो एक कहते हैं कि हमने अपने आप को सीमित रखा है, ऑडिटिंग प्रोसीजर है। मुझे लगा कि हम सजेशन दे रहे हैं कुछ। अच्छा ऐसा बात, ऐसा कहते हैं क्या? मुझे कुछ ऐसा लगा, मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा है। अच्छा अब मेरा तो ऐसा कहना है कि हम तो ये बोल रहे कि ओके नाउ लेट अस सी। चलिए आप एक काम करते, वो आपने पॉइंट किया, अब लेट अस लुक एट द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, रिवाइज AUP रिपोर्ट, हाँ, जिसमें पर्पस लिखा है कि इज टू रिपोर्ट ऑन दिस, और पर्पस लिखा है देन एज एक्नॉलेज that agreed upon procedure has been agreed upon by them for the purpose of this assignment. The practitioner's responsibility, okay, is report finding which are factual. This agreed upon procedure is not an assurance engagement. Accordingly, we do not express opinion on the aforesaid conclusion. सर ये तो यहाँ भी है सर। हाँ भी है सर। मुझे लगा शायद आपका सुझाव सुना होगा और नहीं किया। Had we performed the additional procedure, the other matters might have come to our matters that would have been reported. तो ये कहना चाहते हैं कि सर कि कहीं यूजर ये ना समझे कि ये तो सर्वगुण संपन्न है, इज परफेक्टली ऑल राइट सर। करेक्ट सर? कि उसमें और कोई क्षतियां है ही नहीं। I mean the result, the reader might develop this kind of feeling. तो उसको उनको ये टू अवॉइड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, आई थिंक दे से दैट हम तो पहले कह चुके हैं कि भाई दिस इज नॉट एन एश्योरेंस, तो हम एश्योरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नहीं देते, बट एक कदम आगे जाके कहते हैं कि अगर हमने ऑडिट किया होता तो हमारा रिपोर्ट कुछ और हो सकता है। तो कृपा करके इसे अंतिम मत समझिए इसको, है ना, संपूर्ण कंप्लीट मैन लाइक रेमंड्स मत समझिए, राइट? अच्छा राइट सर, बड़ा अच्छा लगा सर, एटलीस्ट किसी के साथ बात तो की। अनिल लाल साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? आई थिंक ही मस्ट बी बिजी विद समथिंग एल्स, राइट? यस। बट लगातार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं सर, एंड हमारे पीछे पड़ते कि ये दीजिए वो दीजिए ऐसे कहते रहते सर। बिल्कुल अच्छी बात है सर, तभी हो पाता है कुछ, नहीं तभी हो पाता है, नहीं तो गिवन अ चांस, चलो अभी एक आदत ऐसी पड़ती है जब तो कोई फॉलो नहीं करता तो काम नहीं करते, ऐसा हो गया। ओके बट सर एक बात है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो यूएस गैप में है, हम चेयरमैन साहब को भी कहेंगे कि सर प्लीज थोड़ा गौर कीजिए कि हाउ अबाउट यूजिंग द वर्ड इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स या तो इंडिपेंडेंस प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, इफ नॉट ऑडिटर्स, करेक्ट? अब सर एक बात is not there in SRS 4400, but it is there in ISRS 4004.25, मीन्स 25 का पैराग्राफ में वो है। ISRS 4400 रिवाइज, इसमें 25 नंबर के पैराग्राफ में एक बात की है। सर हो सकता है कि we have agreed, both parties, specified parties have agreed to a certain procedure, but nothing is static in the life, बदलाव आते रहते। So as for whatever reasons the things have undergone a change which will render the assumption useless, invalid. So the request that the party may request the practitioner or the accountant or the practitioner or the auditor to change the agreed upon procedure.
This was there in the US GAAP. It is also there in revised ISRS 4400 revised paragraph 25. A change in the circumstances affecting the entity's requirements, a misunderstanding about the nature of the original service, a restrictions on the performance of the original agreement. Sir, कहने का आशय ये है, the idea of this paragraph is there could be certain changes in the circumstances entailing change in the mandate of agreed upon procedure. Yes or no, sir? अनिल जी, हो सकता है ना? ऐसा क्यों माने कि ये यावत चंद्र दिवाकर ऐसा ही रहेगा? हमने सर, when I took up the assignment of this film company or this theater, I never realized that they don't sell physically. They only sell through Book My Show. So the procedure given by you for the physical taking the steps में जो होता है ना, एक पूरा ऐसा रहता है, 1, 2 और 3. पहले फिल्म देखने जाते थे ना, तो ऐसे आते थे, 3 स्टेप होते थे. एक जो इससे जुड़ा हुआ रहता था, दूसरा देन तीसरा परफोरेटेड. आपको 2 दिए जाते थे, एक आप गेट कीपर को देते थे, दूसरा अपने पास रखते थे. तो वो सब आपने प्रोसीजर बहुत इत्मीनान के साथ लिखा, बट सर वहां तो कोई है ही नहीं ऐसा. अब तो वहां पे बार कोड आ गया, आ गया ना सर. सो हाँ, तो ये इसकी वजह से हमको चेंज करना पड़ा. तो आप कीजिए, बट देखिए what if the procedure is to be taken by the auditor is अच्छा, ये भी प्रिकॉशन भी है कि क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए. डिटेल is to clear unambiguous. Okay, now there is one thing. Now before changing the terms and condition, the possibility that certain procedure performed as a part of another engagement are not appropriate for the conclusion in an agreed upon. The reason given for the request by the client, especially in the implications of the restriction of the scope engagement matter, additional efforts required to complete the original engagement. ये सब चीजें ध्यान रखने. एक very important. If the original engagement procedures are substantially complete, आपने तकरीबन 90% काम कर दिया, or effort to complete the procedure is relatively insignificant. In other words, आपको complete करने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा. Immaterial time, insignificant time. Then the auditor should consider the propriety of a change in the agreement. Propriety in the change in the agreement, ये auditor का दायित्व होगा, prerogative होगा कि वो accept करे या ना करे. सर, हमने 95% काम कर दिया और आप बोलते कि अभी ये चेंज करो. सर नहीं करना है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कितना भी फी दो पर नहीं करूंगा, है ना? ऐसा है. It is the auditor's onus in such case to accept or not terms. Rather than onus, I should change the word. Not onus. Onus means दायित्व होता है. Onus का मतलब होता है दायित्व, obligation. So I would say it is auditor's prerogative to accept or not. है ना? So माफ कीजिएगा, this is a wrong word used by me. Sorry about it. So now globally, हाँ सर, ये मैं बोल रहा था, ये globally the used for the preference for an entity which is no, for an entity which is no external requirement for an audit, जैसे कि यूके में है, यूएस में है. Formal assurance opinion in accordance with the assurance standards, the agreed upon procedures over the specified risk in the financial statement can be a cost-effective way of obtaining a comfort for the preparer. सर, ये agreed upon procedure एक और भी काम कर सकती है कि भाई आपको एटलीस्ट वो बताए कि भाई ये आप कर रहे बराबर है कि नहीं, something like that is and the thing which you could not do, you are asking the expert to do it. Correct? This can be supplemented with the professional views. Now here, though not with a formal assurance opinion, if the scope of the work is AUP. अगर ये AUP है तो उसमें आप review, preview, information, conclusion नहीं देंगे, केवल अपने आप को सीमित रखेंगे. अच्छा, now when the AUP can also provide comfort to a third party, it not necessarily the client and you. जैसे मैंने कहा कि that's a finance company which has agreed to give this agreed to get these things done by a practitioner about the government grants utilization. सर, एक और भी बात होती है सर, आपको finance company जो है ना, when they give the loan, NBFCs, non-banking finance companies, when they give the loan, distribute the loan, they want certain third party to find and give them that whether this loan has been utilized properly or not. So builders को loan देते हैं, has it been utilized for the
that particular purpose or not. ये उनको बनाया. These are all example of the agreed upon procedures. Can also provide a comfort to a third party of an entity's compliance with the regulatory or the contractual requirement. Auditors will need to see increased risk associated with the party's interest in report, where they should also consider what terms and conditions at it. Okay, मैं और आप, मैं और मेरा क्लाइंट, वो तो हम समझते हैं, पर जब थर्ड पार्टी आती है तो मुझे और भी ध्यान रखना है कि क्या उनके भी डॉक्यूमेंट्स, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स मैं अटैच कर रहा हूं या नहीं. सैंपल ऑफ द फॉलोइंग थिंग. अच्छा, नाउ हियर द प्रोसीजर का सैंपल मैंने आपको दिखाया था. जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, आपको वापस दिखा दूं सर, वो यही था. करेक्ट. सो दिस आई एम गोइंग टू शेयर आफ्टर सम एडिटिंग एंड ऑल दिस सर. तो ये आएगा आपको. सर मुझे एक ही रिक्वेस्ट है अनिल जी, दोनों अनिल जी से, कि मुझे केवल 2 दिन का टाइम दीजिए. मैं पूरा उससे जहां पे कुछ after your feedback, after maybe I get the questions from the participants, I may modify, edit to suit your requirement. Okay? And तो इसका केवल 2 दिन का समय कीजिए, मुझे देना है सर. आपके लिए तो बनाया है सर. एंड ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है सर. This is not my knowledge. I have assimilated it. जैसे कहूं तो मैंने पूरी बांधी है, कंपाइलेशन किया है सर. This is the compilation engagement for me. कि मैंने पूरा कंपाइल किया है. सूत्र बतौर सूत्रधार मेरी धर्म बनता है कि भाई यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, और अच्छा सा पुलाव बना के दे दो आपको. करेक्ट. यही है मेरा काम. करेक्ट. ओके, सो आई विल गिव यू डेफिनेट, राइट सर. तो ये मैंने दिया है कि भाई रिपोर्ट एग्रीड, सैंपल डेटा फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो अहम जरूरी सर, because that is you to follow the auditing standards, right sir? Sorry, the quality standards and all this. And in fact, SRS 4400 में भी एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि you have to document the findings and all this. And the terms of engagement, sir. Reports on AUP needs to describe the purpose and the agreed upon procedures of the engagement in sufficient detail to enable the reader to understand the nature and the extent of the work performed. Also clarify. हाँ सर, ये तो आपको लिखना ही है. क्लियरली मेंशन कीजिए कि ना तो ये ऑडिट है ना तो रिव्यू है, तो आप मुझसे ज्यादा अपेक्षा मत रखिए. आप मीन्स रीडर. अनिल जी आप नहीं, हाँ रीडर. आप क्यों गंभीर हो गया अनिल जी? All right, now these are the paragraphs of the audit. So AUP report. Title, addresses, identification of the specific financial. These are all given in our standard. जो यहाँ पे है सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मुझे जैसे मैंने कहा कि it is just copied from here. मेरा आपका समय नहीं है. This is the paragraph which says that reporting should be like this. Correct, sir. These are the elements of the report on the agreed upon procedure, a description of the auditor's factual finding. But sir, एक बार बताओ सर, ये तो अभी SRS ICU में है. This SRS is an ICU now. Okay, वो वेंटिलेटर पे बैठा है क्योंकि वो कभी भी रिप्लेस हो सकता है. And the best thing which AASB is doing is हमको दुनिया के करीब लाके रख देते हैं. Whatever is happening at international arena, करेक्ट, वो हमको उनसे भी जुड़ के रख देते हैं ताकि हम ऐसा ना महसूस करें कि भाई ये तो हम पीछे रह गए. तो वो भावना हम में नहीं आने देते सर AASB. करेक्ट. सो ऑलवेज दे कीप आवरसेल्फ अपडेटेड एंड इट्स वेरी कंटेम्पररी कि भाई आप भी कुछ, हम भी कुछ कम नहीं है ना, हम भी इंटरनेशनल बना सके. क्योंकि ये रिपोर्ट बदलने वाला है कुछ ही दिनों में. व्हेनेवर द इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन इट चेंजेस which is under revision to assign with this thing. तो ये सर जो है ना कि many changes including but not limited to the reporting format. Reporting format तो सर हम तो छा गए इस पे सर. क्या बेहतरीन चीजें लिखी है सर. क्या प्रोसीजर अप्लाई किए सर. अब तक तो वो प्रोसीजर अप्लाई कर रही थी, अभी आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई की मुझे क्या मालूम सर. टेस्टिंग क्या, कंफर्मेशन क्या, चेकिंग क्या, कैलकुलेशन क्या, रिकलेक्शन, आई डोंट नो सर. जिसमें उसमें पूरा विवरण दिया है सर. वो परचेज में मालूम है सर, आपने पता है ना देखा. दूसरे चेंजेस जो लाया ना, छोटे मोटे चेंजेस जो
मैंने कहा कि चेंजेस, चलो देखते हैं शायद मैं गलत तो नहीं होना सर। कंप्यूटर जी आइए, पैराग्राफ 25। ये एप्लीकेशन गाइडेंस भी दिए सर उन्होंने। नीचे गया सर। नहीं 25, केवल 25, ए नहीं, A25 नहीं। हाँ, if the agreed upon procedure, sir can you see this, if the agreed upon procedure are modified, बदलाव ना है, change light during the course of the engagement, the practitioner shall agree amended terms of the engagement with the engaging party that reflect the modified procedures. तो वो A43 जो है ना, ए रिफर पैराग्राफ A43, चले वहां पे A43 पे जाते हो, देखते कि A43 में क्या है। कंप्यूटर जी लेट्स गो टू A43। In some circumstances, agreeing the terms of engagement and performing the agreed upon procedure takes place in a linear and discrete manner. In such an agreement, performing is an iterative process which changes to the agreed upon procedure being agreed in as the engagement progress in response to a new information coming. जैसे जैसे आप काम करते जाते, जैसे आप पता चल, अरे सर ये तो रह गया था अपना, this we have forgotten altogether कि there is a subsidy also, and उसके लिए they have to file a compliance report. You get my point? And ये requirement नहीं आई. So the evolving things are there, as a result of which you need to change the terms agreed upon which has been agreed by you. तो सर ये जो है ना बदलाव, this are the changes brought in by the revised ISRS, International Standards on Related Services, revised. And इसकी प्रतिकृति अपने हम होने वाली है हमारा ISRS 4400 रिवाइज्ड। सर अब बहुत से छोटा सा टॉपिक है, कंपाइलेशन, वेरी सिंपल सर। अनिल जी, हो सकता है कि क्लाइंट टैली यूज कर रहे, उनके अकाउंटेंट चले गए छोड़ के, वो आजकल बहुत कॉमन हो गया सर। ऐसे जाते सर, कहाँ गायब हो जाते पता नहीं, अगले दिन सर गुड बाय करके देते, दूसरे दिन मैसेज आ जाता है मोबाइल पे या तो ईमेल पे, सर आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, गुड बाय फॉर एवरीथिंग and my work pending is there in so and so folder, आप देख लीजिए। वो साहब जो कंपनी के जो है ओनर कहते कि साहब देखिए हमारा अकाउंटेंट चला गया, अभी मुझे बैंक को एक प्रोविजनल बैलेंस शीट देनी है, तो मैं आपको एक टैली कर देता हूँ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या तो टैली ले लीजिए आप, डाउनलोड करो, जो भी कुछ करो, आप मुझे सर उसमें से बैलेंस शीट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। So this is a compilation assignment. Correct, sir? तो कहने का मतलब there they use the word accountant. See the difference. अब नोटिस कीजिए डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, कि यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है अकाउंटेंट, न तो प्रैक्टिशनर न तो ऑडिटर, एज अगेंस्ट द ऑडिटर ऑफ द प्रैक्टिशनर। नो ओपिनियन नो रिव्यू तो पहले भी था सर, बट यहाँ तो फाइंडिंग माइंडिंग कुछ नहीं सर, अकाउंटिंग स्किल एज अगेंस्ट द ऑडिटिंग स्किल। ये अल्फाज के इस्तेमाल किए हैं उन्होंने इन द स्टैंडर्ड कंपाइलेशन स्टैंडर्ड 4410। करेक्ट। मैंने आपको सीधी बात कही सर, दोज हु लव हिंदी विल अंडरस्टैंड, सब पूरी बांध के रख देने का और कुछ नहीं। ना तो एथिक्स का स्टैंडर्ड फॉलो करो, ना दी इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंस, कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड सर। दे यूज द वर्ड अकाउंटेंट सर, ऑडिटर प्रैक्टिशनर तो इस्तेमाल किए ही नहीं सर, तो कोई बंधन लागू नहीं पड़ते। For an accountant to use accounting expertise, yes, as opposed to the auditing expertise, to collect, classify, summarize the financial information. Other than as noted in the standard on related services, the accountant is not ordinarily required to make any inquiries of the management to assess the reliability and the completeness, assess the internal control, verify the matters. सर उनको ये नहीं देखना है कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगा है, उनको ये नहीं देखना है कि भाई वो कुछ अक्रूड इंटरेस्ट आने वाला था वो आया कि नहीं, उनको ये बेसिक मिस्टेक एपेरेंट जो है वेरी ऑब्वियस, कि भाई हमने देखा प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है मगर डेप्रिसिएशन नहीं है ना सर, विच इज वेरी ऑब्वियस कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग है,
तो कोई अकाउंटेंट ने बोला नहीं ये तो लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइन है तो हम तो डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किया, नॉट लाइक दैट, बिकॉज लैंड इज डिफरेंट, बिल्डिंग इज डिफरेंट. सो ऐसी जो मिस्टेक है आपको उनको ध्यान केंद्रित करना है, यू टू ड्रॉ देयर अटेंशन and free from the obvious material misstatements. Obvious material misstatements. जैसे मैंने कहा ना कि भाई डेप्रिसिएशन की एक भी फिगर है तो फिर जाने दो, फिर ज्यादा. अच्छा हाँ, वही भी एक बात है कि भाई मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी की कीमत है 10 लाख रुपया एंड डेप्रिसिएशन इज ओनली 1000, सो दैट इज ऑब्वियस कि भाई 10 लाख पे 1000 का कैसे हो सकता है, एंड व्हेन यू नो दैट इट इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, समथिंग लाइक दैट. आपको तहकीकात नहीं करनी है. You don't need to delve deep into the matter. But what is apparent? Obvious. Sir, income tax का आपको comparison दूं तो section 154 rectification of an error है ना सर, जो rectification करते हैं ना 154 में, which is obvious and apparent from the record. Apparent from तो ऐसी कुछ मिस्टेक है तो आप उनको ध्यान दोगे कि भाई साहब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. नहीं, लास्ट ईयर में कमीशन था, ये टाइम कमीशन है ही नहीं, तो यू कैन से दैट इज दैट व्हाई कमीशन इनकम इज टोटली मिसिंग, समथिंग लाइक दैट. Material mistake in application of the identified financial reporting framework. Now what are the material mistake you कहते हैं? Sorry, obvious material mistake are these. Non-disclosure of financial reporting framework and any known departure from them, non-disclosure of any significant matter which accountant has become aware. बार बार एक ही वर्ड यूज करते हैं, अकाउंटेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट. करेक्ट? ना तो कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ना तो एथिक्स है, कुछ नहीं. तो सर जी यहाँ पे माय विवरण इज ओवर. आई एम विलिंग टू टेक द क्वेश्चंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. Thank you so much, sir. Thank you so much for such a wonderful deliberation. You have covered all the aspects of both the SRS. Sir, Honorable Chairman, sir, you are having certain questions. So we may proceed with the question and answer session, sir. Right, sir. Sir, first question is, if we as statutory auditor is asked to provide 3 years revenue, basically this is required by the client for bid document of government. For tender purposes. Yeah. So now this case we can use AUP. Sir ji, AUP in the first place does not debar you to accept this type of AUP. That statutory auditor cannot take this assignment. पहली बात तो ऐसा कोई restriction नहीं है, right? Secondly, you can very well take such assignments provided your procedures are very cut and right, very distinctive and बिल्कुल सही मायने से आपने इनको define किया है. So point is that once you accept the AUP, auditing means this agreed upon procedures, AUPs once you accept, जाहिर सी बात है कि you will follow the procedures to be followed for the AUP. But मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन शायद ये था कि being a statutory auditor, can you or not accept such assignment? Am I right, sir, in my assumption? बेसिकली क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है पार्टिसिपेंट का कि जो उसको रिपोर्ट देनी है वो एयूपी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करके देनी है. सर मेरी या ओके गो अहेड एयूपी या बताइए सर, आप कुछ बीच में विराम ले लिया आपने, बोलिए. उसी फॉर्मेट में देनी है, एयूपी वाले फॉर्मेट में, SRS 400 के हिसाब से. सर ये असाइनमेंट जो है, जो आपका 3 साल का जो भी टेंडर रेवेन्यू का रिकॉर्ड देना है, दैट इज अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, राइट? सो इट हैज टू बी गिवन अंडर AU 4400. जनाब जिन्हें भी ये प्रश्न पूछा है, जिन्होंने, उनको एक हिदायत दूंगा कि फॉलो दिस स्टैंडर्ड, सेंड योर अजम्पशन टू द पार्टी, देन यू टू गिव ऑल दिस एज पर द AU 440. दिस इज अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, करेक्ट? इसमें आपको उन्होंने रिपोर्ट थोड़ी मांगा कि भाई अपना सेल्स क्यों गया, आपने क्वालिफाइड कीजिए, अनक्वालिफाइड कीजिए, आप ये दीजिए कि सेल्स ज्यादा क्यों हो गया, कम हो गया. तो पार्टिसिपेंट्स को मेरी ये है कि उन्होंने ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे, बट दिस से वेरी लिमिटेड दैट ये मुझे बताइए मेरा टर्नओवर कितना है, रेवेन्यू कितना है. एम आई राइट सर? राइट. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन ए प्रोफेशनल इज एंगेज्ड फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, his position is better known as practitioner than auditor. Here difference is clear. While auditor scope. सर कंपाइलेशन में
आप एक क्षण के लिए भूल जाए कि आप ऑडिटर हैं या प्रैक्टिशनर हैं। आपकी भूमिका है केवल एज एन अकाउंटेंट। अब देखिए यहां पे कहीं भी हमने कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र नहीं किया है जनाब। जो भी मेरे फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड, whoever has this question, मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूं। हालांकि आई नो कि इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, देयर इज अ लिमिटेशन, बट आप क्षमा कीजिए मुझे कि इस लिमिटेशन के बावजूद भी आपको समझाना चाहता हूं कि एज फार एज कंपाइलेशन इज कंसर्न, इवन इफ यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्षण के लिए भूल जाए कि आप सीए है, एफसीए है, एसीए, जो भी कुछ है, करेक्ट। एंड आपको न तो कोई कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, केवल अकाउंटेंट की भूमिका निकाली है सर आप, ठीक है। बट वो मानते हैं कि भाई हमारे XYZ, सर उन्होंने नाम दिया है, प्रश्न पूछने वाले का नाम दिया है? नो सर, मेरे पास नाम नहीं आ रहा। नहीं है नाम, अच्छा। तो वो जो प्रश्न पूछने वाले जनाब है मिस्टर एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्लाइंट ये समझते हैं कि भाई मेरा अकाउंटेंट ये बना के दे कंपाइलेशन, उसमें फर्क है, और ये जिन्होंने प्रश्न पूछा वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बना के दे, तो उसमें फर्क है, राइट। तो जो सीए साहब जिन्होंने बना के दिया, कंपाइलेशन किया, उनके तो कुछ वजन पड़ेगा सर, है ना। तो वो आपसे कराते हैं, बट डोंट, यू आर स्टिल एन अकाउंटेंट, दैट्स इट। फाइन सर। The next question is, recently there was an exposure draft on the same SRS 4400. What is the basic difference between existing SRS 4400 and revised SRS 4400? जनाब, ये स्लाइड मेरी थी इसके लिए, जिसमें संक्षिप्त में मैंने बताया कि जो बड़े बदलाव आए हैं, जो दो बड़े बदलाव हैं, that is about the format of the reporting. The nomenclature used is practitioner and not an auditor or not an accountant. And one more change कि भाई just allow me a minute sir, one more change that what if the agreed upon procedure में कुछ बदलाव है, जैसे मैंने जिक्र किया पैराग्राफ 25, एंड अब आपके साथ मैं भी सीख गया एप्लीकेशन गाइडेंस पैराग्राफ A43। चलिए मैं भी लिख लेता हूं, 25 के संग आएगा A43, जो कहते हैं आपको कि जब बदलाव आते हैं परिस्थिति में, when there is a change in the situation, in the assumption, underlying assumption, how to change the agreed upon procedure and whether to change it or not. पहले तो प्रश्न है कि बदलना है जरूरी कि नहीं। तो ये जो थी प्रावधान, इट वॉज नॉट देयर इन दी अर्लियर एग्जिस्टिंग SRS 4400। फिर एक देयर इज वन मोर चेंज, जैसे यू नो इन केस ऑफ ऑडिट देयर इज एक्सपर्ट्स द यूजिंग ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट in case of audit report, correct, there is a saying that I think it is SA 620, using the work of an expert. तो वैसे भी यहाँ पे using the work of an expert का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। So these are the basic changes which are there. But the one who asked me a question is a very good question. Good. So I'll do one more thing. The gentleman who asked me a question कि आपने मुझे प्रेरित किया, you pushed me to make one more document, and there's a comparison between the existing SRS 4400 and SRS 4400 proposed or the revised. This is a wonderful thought given by you, है ना। तो अनिल साहब, अनिल लाल साहब, और अनिल हमारे जो साहब है चेयरमैन साहब, सर ये आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ा मुझे दिशा निर्देश दिया है, and जिसका मैं पालन करूंगा, and I'm going to share with you, and that's the reason I'm going to tell you. I told you that I may take 1 or 2 days to compile and give it to you the complete, but sir ये मेरा वादा रहा कि मैं आपको जरूर दूंगा। एंड ये जो पीपीटी आपने देखी है उसका लिटिल फाइन ट्यून वर्जन मैं आपको दूंगा, एंड प्लस नाउ द कंपैरिजन, आई मीन नॉट टू डिटेल बट मोटा मोटा कंपैरिजन। जैसे आपने देखा सर कि भाई format of the report is such a wonderful report that it gives the procedures and the findings which was not there under the existing, which is not there under existing SRS 4400, correct sir। then थोड़ा फॉर्मेट में चेंज है, ओपिनियन पहले, सॉरी द फाइंडिंग्स का पैराग्राफ पहले ले दिया जो पहले नीचे था, लाइक दैट। सो लाइक दिस सम, और दूसरा भी मेजर जो है, जैसे मैंने कहा कि यूजिंग द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, एंड देन द मॉडिफिकेशन चेन में कैसा किया, वो सब जो है वो
I will definitely prepare a nice document and give you the through the lights on that. So whoever has asked this question, if you can give me your name and the place where you belong from, I will really, I will, I'll tell your name and recognize that you ask you a very good question. बहुत अच्छा प्रश्न है. I would say this is the question of the day. Right, sir. Right. Whether we move to next question, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर. अनिल जी बोलिए सर, अगला प्रश्न. सर एक क्वेश्चन आया है, वेदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज एयूपी और एश्योरेंस फंक्शन. Utilization of what, sir? Funds. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. Funds. Sir, it is assurance नहीं होगा सर. It is narrating the facts. आप यही कह रहे आपको इतनी ग्रांट मिली, इतने समय मर्यादा में आपको पेमेंट करना था, यूज करना था, एंड यू डन इट. यस और नो, दैट्स इट. इट्स एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. ओपिनियन क्या देंगे सर आप? राइट सर. एक क्वेश्चन आया सर, special assignment was given by client to examine last 5-year accounts to check whether any expenses had been missed out or income was incorrectly taken in their audited annual accounts, and a report was to be furnished in the manner they could understand. This was 10 years ago. Report furnished. This led to certain adverse conclusions on some of those years. Report was furnished to the client, on which further course of action was recommended after legal consultants' discussions. These expenses were required to be booked in the year in which these were found. Was this course of action correct? Sir, मुझे एतराज है word recommendation. You're not supposed to recommend. You're not supposed to give an opinion. It is not an agreed upon procedure. आप सिर्फ यही कर देंगे मेरे हिसाब से इतना एक्सपेंस ऑन एक्रूअल, these are on cash basis, and यहां तक आप स्टॉप हो जाते तो it would have been agreed upon procedure. बट आप एक कदम आगे चले गए और रेकमेंड किया कि मेरे हिसाब से ये नहीं लिया गया है, this should have been there, you should have internal controls and all this. आप आपकी सीमा रेखा पार कर गए और विक्रम और वैताल के जैसा हो गया. आप सीमा रेखा पार करके मैं चला. मैं नहीं जाने वाला हूं, बट कह रहा हूं ऐसे. ठीक सर. In other words, if you recommend something, it is not an AUP. Anil sir. Yes sir, these were the questions sir. Any other questions sir? No sir, these were the questions. Now we are not having any other question. So sir, thank you so much sir on behalf of SSB of ICI for sparing your valuable time and enlighten all of us on both the SRS 4400 and 4400 revise. Sir, frankly speaking, this is really very nice when you have talked about 4400 SRS as well as 4410 revise compilation engagements, as well as you have covered the various changes which we have, the AASB have came out with the exposure draft recently. And sir, from the core of my heart, I extend once again, thank you to you. Apart from having very, very busy schedule, as well as the very so many meetings lined up with you, you have agreed again, and you rightly mentioned you never say no to me, and always ready for the सैली जी, मैं सच कहता हूँ कि आज मेरे बहुत प्रेस टाइम में वो चलता है, कुछ बहुत सी चीजें, तो मुझे ना कहना था, पर पता नहीं क्या अनिल भाई आप में जादू है कि मैं ना नहीं बोल पाया आपको. Yes sir, yes sir, yes sir. हमारी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर थी अनिल जी, हमारी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर थी बिटवीन यू एंड मी दैट आप इस पे विजिट करेंगे, बट जो रिवाइज पे था उस पर कुछ नहीं था. फिर भी मैंने सोचा कि भाई उसके लिए थोड़ा किया जाए. एंड दैट्स द जेंटलमैन हु आस्क्ड मी क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन. एंड अनिल जी, इनफैक्ट ऑफ कोर्स आपकी तो पूरी टीम ने बहुत काम किया है, जो कमेटी बनाई है, बट फिर भी यू कैन आल्सो, आई मीन आई विल मेक इट इन सच अ मैनर दैट एएसबी आल्सो कैन यूज इट वेरी इफेक्टिवली. Yes. फिर आप तो एक्सपर्ट से बहुत वहां की काफी तो भंडार है आपके पास तो. Yes sir. Thank you so much sir. योगदान मेरा रहेगा सर इसमें. Always sir. You have given your commendable. कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ ऐसा कुछ अंदाजा कुछ? Sir, I will check from the IT team, then I will get to you sir.
Sir, once again, thank you so much, sir. I also extend my warm and heartiest thanks towards the Honorable Chairman of Cathal Branch of NIRC of ICI for acceding to our request as well as co-hosting this webinar as well as moderating this webinar. Thank you so much, Anil sir, for sparing अनिल जी तो मेरे साथ बने रहते सर, बिल्कुल एकदम से थे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे भी काफी सहयोग दिया। थैंक यू अनिल जी, द्वितीय साहब, चेयरमैन जी। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Really, it was a wonderful deliberation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Take care, sir. Bye. To all participants and organizers. Yes. God bless. Yeah. Thank you. Bye.